Hello and welcome. You're watching Tracking COVID-19, our special half-an-hour show in which tell you all the developments on the pandemic. We'll also get you inputs about the steps taken by the administration, inputs by our correspondents, global developments and experts' advice. All packed together in the next 30 minutes. Let's begin with the top updates. Government releases the revised guidelines for Lockdown 2.0 to be implemented after April 20th. Limited activity permitted in select areas including agriculture. Cabinet Secretary to constantly monitor the situation with state chief secretaries. All rail, air and road transport along with metro services to remain suspended. Cinema halls, sporting activities and religious places to remain closed for public. After April 20th, limited activities to be permitted in select areas, including health, agriculture and horticulture. Mandis too allowed to remain functional. Number of active corona positive cases in the country near 10,000. Around 1,300 recover while the death toll stands at 377. Maharashtra and Madhya Pradesh continue to register maximum COVID-19 fatalities. Maharashtra sees 300 more corona positive cases in a single day. The death toll at 178 in Madhya Pradesh as the death toll reaches 53. In a major relief to the stranded professionals in the United States, Department of Homeland announces relaxation in visa rules. Now the professionals and tourists can apply for 8-month extension of visas. And as the global corona positive cases reaches 2 million, US remains the worst affected with the death toll mounting to 26,000 and 2,228 deaths in a single day. US President Donald Trump announces withdrawal of funding to World Health Organization, accuses the organization responsible for hiding the ferocity of the pandemic. Well, let's first take stock of the developments in India in Ground Zero. Well, as per the Prime Minister's order, the second phase of lockdown has begun and that will go on till the 3rd of May. The Ministry of Home Affairs has issued guidelines to effectively be implemented during this particular lockdown period. The guidelines have prohibited interstate, inter-district movement of people. Metro, bus services continue to be prohibited and all places of worship and religious gatherings have been strictly prohibited till May 3rd. Farming operations, including the procurement of agricultural products, agricultural marketing through notified mandis and direct and decentralized marketing, animal husbandry activities, including the supply chain of milk, milk products, poultry and livestock farming, and tea, coffee and rubber plantations are allowed to be functional. But for more inputs on that particular story, let's head to our correspondent Sudhakar Das, who's joining us with more. Sudhakar, good morning. Sudhakar, what's different from the guidelines issued in Lockdown 1.0 to Lockdown 2.0? बहुत अहम है अनिल, खास तौर से ये बहुत समझना जरूरी है और प्रधानमंत्री ने कल जो ऐलान किया था उसके मद्देनजर ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने जो पहले कहा था जान है उससे आगे बढ़कर उन्होंने कहा जान भी और जहान भी। तो लॉकडाउन 2 में कोशिश ये है कि जो ऐसे इलाके जो कोविड प्रभावित नहीं है
जो हॉटस्पॉट नहीं है, और ध्यान रहे अनिल की ऐसे जिलों की संख्या 400 से ज्यादा हो, तो वहाँ क्या लिमिटेड एक्टिविटीज को प्रोत्साहित किया जा सकता है, लिमिटेड इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, इस तरह की एक्टिविटीज को प्रोत्साहित किया जा सकता है, तो उसकी कोशिश है। और खास तौर से इस बात को ध्यान में रखते हुए जो कमजोर तबका है, जो गरीब तबका है, उसकी आजीविका बनी रहे, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, उसको ध्यान में रखते हुए इसमें 2-3 जो बेहद ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो ये पूरी सूची, जो गाइडलाइंस जारी की गई है। एक तो पहला हिस्सा कौन सी चीजें बंद रहेंगे, काम नहीं करेंगे, उसकी एक पूरी सूची बनाई गई है। दूसरा, जो हॉटस्पॉट्स को लेकर क्या रणनीति रहेगी, उसके बारे में बात की गई है। हॉटस्पॉट्स में जरूर सख्ती बढ़ाई जाएगी, और लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को उसका सख्ती से ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि ये इंश्योर करते हुए कि एसेंशियल सर्विसेज जारी रहे। और जो पहले से जो चीजें बंद थी, लगभग उतनी चीजें अभी भी बंद रहेंगी, जिन इलाकों में लिमिटेड एक्टिविटीज की इजाजत नहीं मिलती है। लेकिन जहां लिमिटेड कुछ एक्टिविटीज की इजाजत मिलेगी, वो भी 20 अप्रैल के बाद। और जिला प्रशासन राज्यों को ये कहा गया है कि फेज्ड मैनर में, और जो नॉर्म्स है हेल्थ मिनिस्ट्री के, सोशल डिस्टेंसिंग के, हाइजीन के, इन तमाम नॉर्म्स को फॉलो करते हुए अगर कुछ किया जा सकता है, तो फेज्ड मैनर में वो अलाउ किया जा सकता है। तो उसकी जो 18, 19, 20 एक बहुत लंबी सूची भी तैयार की गई है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है अनिल उसमें, क्योंकि हमको पता है कि एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, फार्मा हो, इस तरह की चीजों को पहले से ही छूट मिल गई थी। एक तरह से कह सकते हैं कि उसका दायरा जो है और बढ़ाया गया है। बार बार लेकिन पर जोर दिया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए, लेकिन जो कुछ लिमिटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करने की बात हो, रोड कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन प्रोजेक्ट, एमएसएमई के प्रोजेक्ट, उसको काम करने की अनुमति हो, जूट इंडस्ट्री हो, कुरियर सर्विसेज हो, इस तरह की तमाम चीजों को जो काम करने की अनुमति देने की बात हो। एक तरह से डाटा सेंटर्स हैं, आईटी और आईटी एनेबल्ड जो सर्विसेज हैं, अगर 50% स्टाफ के साथ काम कर सके, उनको अनुमति देने की बात हो। पब्लिक यूटिलिटी से जुड़ी हुई चीजें, तो एक तरह से दायरा बढ़ाया गया, लेकिन सीधा पहला मकसद है कि जो लोगों के को अफेक्ट कर रहा था, गरीब तबके को सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा था, उस तबके को राहत दी जाए। दूसरा मकसद है, क्योंकि ये एक इंडेफिनिट पीरियड तक नहीं जारी रह सकता है, तो एक तरह से कोशिश, अगर जो डायरेक्टिव्स जो स्वास्थ्य मंत्रालय के हैं, सरकार के हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के हैं, उसको फॉलो करते हुए क्या हम आगे की यात्रा कर सकते हैं, तो उसको देखने की कोशिश है। लेकिन सख्ती से साथ इन चीजों को जिला प्रशासन, राज्य सरकारें इंश्योर करें, और खासतौर से अनुमति जो ज्यादा प्रदान की गई है, वो रूरल, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो अब तक सौभाग्य से देश में अछूते रहे हैं कोविड से, उन इलाकों में इस तरह की ज्यादा अनुमति प्रदान की गई। Sudhakar, purely looking at manufacturing and other industrial establishment, also you made a brief mention about rural economy, to provide an impetus to rural economy. Give us more when it comes to manufacturing and those particular industries, allied industries that are associated with manufacturing, that benefit from this particular guidelines 2.0. देखिए, सबसे पहली बात तो ये इंडस्ट्री, ये इलाके इस तरह की जगहों पर जो हॉटस्पॉट नहीं है, जो कोविड केसेस जहां नहीं है, और खासतौर से अगर रूरल ग्रामीण इलाकों में है, तो इनको प्रोत्साहन तरजीह दी जा सकती है। यहाँ जो स्टाफ आएगा काम करने के लिए, उसके लिए आने जाने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर सके ये कंपनियां, और साथ ही साथ उनके लिए जो सैनिटाइजेशन है, पर्सनल हाइजीन, उनकी सोशल डिस्टेंसिंग, अगर काम करने की इस तरह के स्पेस हैं कि 6 फीट की दूरी पर अगर वो काम कर सकते हैं, इस तरह के जो, तो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन होंगे इस तरह से नहीं लिखा गया, लेकिन ये जरूर लिखा गया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईटी हार्डवेयर है, उसको एक तरह से अनुमति होगी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसेंशियल गुड्स इंक्लूडिंग ड्रग्स, देखिए इसको पहले से भी अनुमति थी, लेकिन उसमें और भी जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, मेडिकल उपकरण बनाते हैं, कोल प्रोडक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण है, माइनिंग कोल प्रोडक्शन को भी इन नॉर्म्स को सख्ती से फॉलो करते हुए उनको अनुमति प्रदान की गई है। जूट मैन्युफैक्चरिंग, जो जूट इंडस्ट्री है, उसके लिए अनुमति प्रदान की गई है। ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन से संबंधित जो कंपनियां हैं, तो ये हमको पता है कि ये इस तरह के इलाकों में है जहां उस तरह की भीड़ भाड़
या शहरों जैसी आपाधापी नहीं है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो इंडस्ट्री, हमको पता है कि एसईजेड आमतौर से शहरों से बाहर रहते हैं और वहाँ एक तरह से लिमिटेड एक्टिविटी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है जो निर्यात करती है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को भी अब आगे बढ़ाने का एक तरह से चुनौती है, उस चुनौती से कैसे पार पाया जा सके तो उसके लिए। लेकिन वो इसमें बार बार जोर देकर ये लिखा है कि जो एसओपीज हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। जो इस तरह की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो रूरल इलाके में है खासतौर से उसको प्रोत्साहन देने की बात है, तो एक तरह से थोड़ी बहुत जवाबदेही राज्यों जिला प्रशासन के ऊपर भी छोड़ी गई है कि वो ये तय करें कि इस तरह के मानकों में कौन लोग फिट आएंगे। तो वो काफी महत्वपूर्ण है, राज्यों की जवाबदेही जिम्मेदारी ये इंश्योर करते हुए कि वो स्पेशल ऑपरेशनल प्रोसीजर जो बनाया गया उसके लिए अलग अलग तरीके से एक लंबी एक पूरी सूची बनाई गई है, यहाँ तक कि लिफ्ट में कैसे जाना है, अगर कैंटीन में बैठ के खाना है तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए। तो एक तरह से बहुत माइन्यूटली बहुत बारीकी से उन तमाम गाइडलाइंस को जारी रखते हुए, और देखिए निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि ये एक्टिविटीज की अनुमति इसलिए दी जा रही है कि सरकार को गरीबों की चिंता है और सबसे कमजोर तबके की चिंता है, लेकिन अगर उल्लंघन होता है, लोग जो नॉर्म्स है उसका ध्यान, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखते हैं, केसेस आते हैं, तो ये जो ढिलाई है वो ली भी जा सकती है वापस। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इंडस्ट्री को ध्यान भी रखना पड़ेगा। लोग देखिए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले ऐसे लोग हैं जैसे प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, इस तरह के जो आईटी सर्विसेज प्रदान करते हैं, कई लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है उनकी बिजली खराब हो, नल खराब हो, तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है इस तरह के लोग जो कामगार हैं उनको भी अनुमति दी गई है। तो बड़ा दायरा जरूर है, लेकिन एक तरह से फेज्ड मैनर में बोला गया है कि धीरे धीरे, ऐसा नहीं हो कि आप अचानक से 20 तारीख को ये जो तमाम पूरी लिस्ट है वो उसके हिसाब से खोल दीजिए, लेकिन ये कहा गया है कि फेज्ड मैनर में धीरे धीरे करके इन चीजों को की अनुमति दीजिए। देखिए कितना वो फॉलो कर रहे हैं, अगर स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग केसेस नहीं आते हैं तो फिर उस दायरे को बढ़ाया जा सकता है और भी चीजें उसमें शामिल या जोड़ी जा सकती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक अगले पड़ाव की तैयारी है। अनिल, इसमें एक बात और भी जोड़ना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने कल जो एक महत्वपूर्ण बात कही थी, वो ये बात कही थी कि अगर 1 लाख केसेस आते हैं भारत में, सिर्फ 10,000 केसेस है, हमको पता है कि पिछले 2-2.5 महीने में जिस तरह से केंद्र सरकार ने और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अहम निर्णय लिया है उसकी वजह से हमने अभी तक कंटेन करके रखा, लेकिन केसेस आते हैं तो 1500-1600 लोगों को अस्पतालों की जरूरत पड़ती है। 10 अगर तो उसमें इस तरह में हमारे पास अब तक कोविड के 1 लाख बेड्स तैयार हो चुके हैं, कोविड के अस्पताल जहाँ, तो अगर दिक्कतें भी आती है तो उसके लिए भी पूरी तैयारी है, लेकिन एक अनलिमिटेड टाइम तक इन चीजों को रोका नहीं जा सकता था। तो धीरे धीरे ध्यान रखते हुए और थोड़ा सा एक तरह समीक्षा भी हो जाएगी 3 मई तक, जो ये इलाके हैं छूते रहे हैं वहां अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए गतिविधियां चल सकती हैं तो आगे के लिए भी रास्ता बनाया जा सकेगा। तो सरकार the objectives clearly being met there. The objective of this particular revised guidelines is to consolidate the gains that we achieved in the first phase of lockdown and also to keep and contain the spread of COVID-19. That's not all. It should also provide relief to farmers and labor and also daily wage earners. Some steps that have been taken there. A consolidated revised guidelines for lockdown 2.0, the first day of which begins today, is clearly out there in public domain. People now need to follow these rules and see to it that the center as well as states coordinate also from the state to the district administration. If there is a smooth, seamless transmission of how exactly this particular guidelines are followed, it would benefit one and all. Well, Sudhakar, thank you and appreciate you joining us with those inputs there on that particular story. Moving ahead, meanwhile, the total number of active COVID-19 cases across the country has gone up to 9,756. The death toll stands at 377, while 1,305 people have been cured and discharged, while 1 person has migrated. Maharashtra and Madhya Pradesh continue to register the maximum COVID-19 fatalities.
The two states, one from the western part of India and central India, being the one with the most number of fatalities when it comes to COVID-19. With COVID-19 tightening its grip on the country, Maharashtra sees 300 more corona-positive cases in a single day, making the total number of cases climb to 2,687. The death toll in the state of Maharashtra stands at 178, followed by Madhya Pradesh, where the death toll has reached 53, with the total number of cases mounting to 730. Meghalaya's first COVID-19 patient passed away this morning. The news was confirmed by the Chief Minister Conrad Sangma on his Twitter account. This is what he wrote, and I quote, "I am deeply saddened to inform that the first COVID-19 positive patient in Meghalaya passed away this morning at around 2:45 a.m. My heartfelt condolences to the family and the loved ones. May his soul rest in peace." Coming back to western part of India in Gujarat, where the Congress MLA Imran Khedawala has tested positive for COVID-19. Earlier on Tuesday morning, the MLA from the Khadia Jamalpur seat of Ahmedabad, along with some other Congress MLAs, was present in a meeting with the Gujarat Chief Minister Vijay Rupani, held at the Chief Minister's official residence in Gandhinagar. The meeting was also attended by the top brass of the Gujarat government, including the state's Deputy Chief Minister, Home Minister, Principal Secretary of Health in the state, as well as the Ahmedabad Police Commissioner and Municipal Commissioner. After the meeting at the Chief Minister's house, Khedawala also held a press conference, which was attended by many journalists. The presser was held in the Gujarat Secretariat's Narmada Hall, which is used for all official press briefings. Well, let's now take a look at some updates that inspire hope and positivity in tackling coronavirus outbreak. Well, in an attempt to safeguard the dignity and hygiene of poor women in slum areas, an all-women police team of Bhubaneswar have distributed free sanitary napkins and sanitizers to women in the containment zones of the capital city in Odisha. Due to lockdown, most women are unable to go outside to purchase essential commodities like sanitary napkins and sanitizers. Realizing this problem, Lady Cops, headed by the Traffic DCP, Sagarika Nath, distributed the essential items and also created awareness about menstrual hygiene among women in the slum areas. The Traffic DCP said that people must ensure that menstrual hygiene while talking about sanitation and hygienic measures to curb the spread of coronavirus infections. She also appealed to the people to follow the lockdown guidelines and also to maintain social distancing. However, Odisha government has imposed strict rules to ensure lockdown and has now sealed all the containment zones across the state. Essential commodities are also being provided to the people at their doorsteps. Meanwhile, in a big relief for thousands of stranded Indian professionals in America due to the coronavirus pandemic, the US government has decided to accept their H-1B visa applications for an extended stay in the country. The H-1B visa is a non-immigrant visa that allows US companies to employ foreign workers in specialty occupations that require theoretical or technical expertise. The US Department of Homeland Security, in a new notification, has said it recognizes that there are immigration-related challenges as a direct result of the coronavirus pandemic. US President Donald Trump on Tuesday has instructed his administration to at least temporarily halt funding to the World Health Organization or WHO over its handling over the coronavirus pandemic. Addressing a news conference, President Trump said that the WHO had failed in its basic duty and it must be held accountable. He said that the group had promoted China's disinformation about the virus that likely led to a wider outbreak of the virus than otherwise would have occurred. Instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. The organization's leading sponsor, the United States, has a duty to insist on full accountability.
Meanwhile, the WHO has been appealing for more than $1 billion to fund operations against the pandemic. The UN agency needed more resources than ever as it leads the global response against the disease. Meanwhile, reacting on U.S. decision of halting funds to the WHO, the United Nations said that this is not the time to reduce the resources of WHO. United Nations Secretary General Antonio Guterres said now is the time for solidarity to stop the virus and not the time to reduce the resources for the operations of WHO or any other humanitarian organization in the fight against the virus. Well, as the global corona positive cases reach 2 million, U.S. remains the worst affected with the death toll mounting to 26,000 and 2,228 deaths in a single day. At least 25,992 people in the United States have died, and this is the highest death rate in any country. A total of 10,842 New York residents have died due to COVID-19, nearly half of the total across the country. The largest number of fatalities is still in and around New York City, the most populous U.S. city with about 8.6 million people. The total confirmed cases of COVID-19 in the United States has crossed the 6 lakh mark. In United Kingdom, a 99-year-old war veteran has raised more than £2 million for British health workers by attempting to walk the length of his garden 100 times before his 100th birthday later this month. Retired Captain Tom Moore, who had used a walker to move around since breaking his hip, was grateful to the National Health Service for the treatment he received in the past and wanted to do something in return. Britain's state-funded National Health Service is under severe strain as it treats a large number of people suffering from COVID-19. The death toll from COVID-19 in British hospitals reached 12,129 when last reported. Well, that's all we have time for, but we feel that each one of you staying indoors and following all the guidelines is a superhero or a Shaktiman. A special thought for the kids who are feeling the heat, staying indoors, cut off from their friends. Enjoy the time talking to elders, staying positive. Remember, a problem is a chance for you to do your best. Bye for now. We'll be back tomorrow, same time, same channel. Until then, take care and stay safe. Bye-bye.